Assalamu alaikum. COVID-19 has put a lot of businesses at loss and most of the businesses have shut down. इसमें एयरलाइन इंडस्ट्री भी है, टूरिज्म ट्रैवल इंडस्ट्री है. लोगों को ये लगा कि हो सकता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतना इफेक्ट ना हो उससे, पर अगेन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी तो चलती उन्हीं बिजनेस की वजह से है. मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउसेज बेसिकली वर्क फॉर द अदर कंपनीज, और बहुत कम सॉफ्टवेयर हाउसेज ऐसे हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स खुद बना रहे होते हैं. तो बहुत सारे लोगों के जब बिजनेस बंद हुए तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी गई. पीपल एंडेड अप लूजिंग देयर जॉब, और ये एक कैटास्ट्रोफिकल सिचुएशन बनने जा रही है हमारे मुल्क में, न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि तकरीबन ग्लोबली. ऐसी सूरत हाल के अंदर जब कोविड ने जॉब्स को मुतासिर किया तो वहीं पे जॉबिट के नाम से एक प्लेटफॉर्म मुतारिफ हुआ कि जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी सीकर्स को कनेक्ट किया जा रहा है अवेलेबल जॉब्स के साथ. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उसके रूहे रवां, उसके फाउंडर जनाब हमजा जावेद साहब. First of all, I'm honored to be on your channel. Thank you so much for having me. Jobit19 का मैं आपको बता देता हूँ कि it's a recruitment platform specifically for software industry. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए ही है. आपको पता है इस पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स इम्पैक्ट हुई हैं. इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो बिल्कुल मुतासिर हुए ही हुए हैं, लेकिन उनके साथ जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स, HR एग्जीक्यूटिव्स, मार्केटिंग, UI UX डिजाइनर, ये सब लोग उसी एक ग्रुप में फॉल करते हैं, राइट. तो jobit19.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन जॉब सीकर्स को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करवाता है. इसको स्टार्ट हुए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी 10 दिन हुए इसको लॉन्च किए हुए. एंड विद इन दीज 10 days हमारे पास ओवर 2200 कैंडिडेट्स रजिस्टर हुए हैं. 150 रिक्रूटर्स रजिस्टर हुए हैं जो कि पाकिस्तान की टॉप कंपनीज से भी बिलोंग करते हैं. वी हैव ओवर 100 जॉब वैकेंसीज ऑन आवर पोर्टल, और होपफुली आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जॉब्स मिलनी भी इससे स्टार्ट हो जाएंगी. क्योंकि अभी जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, रिक्रूटर्स ने 5000 कैंडिडेट्स को फिल्टर किया है हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, विच इज अ बिग अचीवमेंट फॉर सच अ स्मॉल स्टार्टअप. 2200 job applicants and 100 jobs. Correct. So the competition is very high. The competition is very high. और इसमें जो competent लोग होंगे वही पिक किए जाएंगे. अब I would say कि all of those will be competent actually, क्योंकि ये सब on job थे और due to the COVID season उनकी ये जॉब चली गई. थोड़ा सा बताइए कि कितना टाइम लगा इसके ऊपर बनाने में. बैक इन मार्च और अप्रैल आई बिलीव हमें न्यूज़ मिलना स्टार्ट हो गई थी कि सॉफ्टवेयर कंपनीज विल स्टार्ट टू ले ऑफ देयर रिसोर्सेज, दे विल डाउनसाइज. तो हम काफ़ी नाइफ थे. वी थॉट कि अच्छा ये सब डराने के लिए है, जस्ट टू मेक अस वर्क रियली हार्ड ना, तो ऐसा होना कुछ नहीं वाला. तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि इस तरह की न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई. पाकिस्तान में से जो जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, इवन दे हैव स्टार्टेड लेइंग ऑफ रिसोर्सेज. तो हमने कहा ओके अच्छा ये काम हमारी इंडस्ट्री के साथ भी स्टार्ट हो गया, लेकिन एवरीथिंग वाज फाइन बैक देन. फिर ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे न्यूज़ मिली कि सम ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ दिस डाउनसाइजिंग. तो दैट इज एग्जैक्टली व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज. तब पैरों तले से ज़मीन निकली और फिर आई थॉट कि नहीं, समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट दिस. तो दैट वाज द मोमेंट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन Jobit19. और मुझे अच्छी तरह याद है कि ईद के सारे रोज़ मैंने काम करके कोडिंग करने में ही गुजारे, और फिर जाके ये प्लेटफॉर्म अभी 2200 रजिस्ट्रेशंस होल्ड कर रखे हैं. आपने सिंगल हैंडेडली सारा डील किया है इसको. हमारी टीम में एक ग्राफिक डिजाइनर है, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, एक हमारे पास बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है, और मजे की बात ये सारे रोल्स मेरे ही हैं. तो अभी आई एम द ओनली वन वर्किंग ऑन दिस स्टार्टअप. हाँ, इतने कम वक्त में आपने इतनी सारे एनरोलमेंट्स ले ली, so that's really wonderful. इसका बिजनेस मॉडल क्या है? How do you get to earn? It is absolutely free for students and job seekers. बेशक वो students हो, fresh graduates हो, final year students हो या experienced resources हो. लेकिन obviously we had to keep our servers running as well, so it would be paid for companies. और इसका हमारा monthly subscription है. और आपके जो competitors हैं वो तो pretty giants हैं आपके मुकाबले में. How do you feel about that? इनकी प्रेजेंस में अगर इतनी हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ गई हैं तो इसका मतलब है कि अभी भी कुछ ऐसे हॉलोज हैं जो कि इन कंपेटिटर्स ने फिल नहीं किए. सेकेंड थिंग इज कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो नीश स्पेसिफिक नहीं है. वहाँ पे आपको ब्लू कॉलर्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको कुक्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको ड्राइवर्स भी मिलेंगे. लेकिन हमारी वेबसाइट चूँकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को टारगेट कर रही है, तो हमारा एक्सपीरियंस भी बड़ा कस्टमाइज्ड है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए. यानी रिक्रूटर्स को जिन जिन फील्ड्स की ज़रूरत है एक हायरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, वो सारी उसके अराउंड हमारा पोर्टल रिवॉल्व कर रहा है. तो दिस इज समथिंग दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम आवर कंपेटिटर्स.
if you're looking for an internship or a full-time job, so this is the platform for you. آپ یہاں پہ آئیں. The moment you register yourself, your profile becomes discoverable by the recruiters. جیسے آپ رجسٹر کر لیتے ہیں, recruiters آپ کو فلٹر کر سکتے ہیں, آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کو جاب آفر کر سکتے ہیں. Secondly, we try to simulate online career fairs. تو ہمارے پاس booths ہیں, اور ایک booth کے اندر multiple job vacancies ہیں. اگر آپ آ کے کسی پرٹیکولر جاب میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ ایک بوتھ میں جا کے کسی پرٹیکولر جاب پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن دیٹس ناٹ مینڈیٹری. دا مومنٹ یو رجسٹر آپ آلریڈی ریکروٹرس کی لسٹ میں آ جاتے ہیں. دیٹس دا فرسٹ کمیونٹی آئی وانٹیڈ ٹو اپروچ. نمبر 2 از کمپنیز اینڈ ریکروٹرس. اس میں جائنٹس آ جاتے ہیں, اس میں اسٹارٹ اپس آ جاتے ہیں. اف یو آر اے کمپنی ہو از اسٹل ہائرنگ ڈیورنگ دا پینڈیمک, so this is the platform for you to find your next star performer. ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں اس وقت 2200 کینڈیڈیٹس ہیں. اس میں فریش گریجویٹس بھی ہیں, اس میں ایکسپیرینس ریسورسز بھی ہیں, اور ہمارے پاس وہ سارے پیرامیٹرز ہیں جو کہ آپ کو ہائرنگ پروسیس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہیں. دا مومنٹ یو رجسٹر ود ان 3 منٹس آپ ہائرنگ پروسیس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جتنے بھی ریکروٹمنٹ کے لیے آپ کو پیرامیٹر چاہیے وہ ہمارے پاس ہیں. لاسٹ ایک میں اعزاز آپ کے چینل کے تھرو اپروچ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ امبیسڈر, ہمارے پوٹینشیل امبیسڈرز ہیں. بیسکلی آپ کو پتہ ہے اٹس اے ویری اسمال اسٹیج اسٹارٹ اپ. ابھی وی ہیونٹ اسٹارٹڈ جنریٹنگ ریونیو, سو وی آر ریلائنگ آن آور امبیسڈرز. تو اف یو آر این انفلوئنسر, یا آپ کوئی کمیونٹی لیڈر ہیں, یا آپ یونیورسٹی کی کوئی سوسائٹی کے چیئر پرسن ہیں, یا آپ کوئی فیکلٹی ممبر ہیں, تو پلیز گیٹ ان ٹچ ود اس. آپ ہمارے ساتھ ہمارے امبیسڈر پروگرام میں آ سکتے ہیں, اور ہمارے جو امبیسڈرز ہیں دے آر رسپانسبل فار شیئرنگ اور انفارمیشن ود دیئر نیٹورک. تو آپ کو ہم کانٹینٹ پرووائڈ کر دیں گے, آپ کے لیے کسٹمائز کانٹینٹ ہم جنریٹ کر سکتے ہیں, اینڈ آن دا اونلی رسپانسبلٹی وڈ بی شیئرنگ دیٹ کانٹینٹ ود یور نیٹورک. اور اگر آپ کی ایک پوسٹ شیئر کرنے سے آپ کسی کی جاب کا وسیلہ بن سکتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے بیٹر کوئی آپ کے لیے اپرچونیٹی ہو سکتی ہے ڈیورنگ دا پینڈیمک. گریٹ ورک حمزہ. آئی مسٹ سے کہ آپ نے اپنی اسکلس کو, ایفرٹس کو صحیح جگہ پہ لگایا ہے. اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, آئی وڈ ریکویسٹ دیم کہ وہ jobit19.com کو جتنا پروموٹ کر سکتے ہیں کریں, سو دیٹ کہ ہمارے ہی آس پاس کے لوگ, ہماری اطراف کے لوگ, ہماری دوستوں میں سے جن لوگوں کی جاب چلی گئی ہیں یا جو اب نئی جاب شروع کرنے والے ہیں, ان کو موقع ملے انڈسٹری سے کنیکٹ ہونے کا, اسپیشلی دی پیپل فرام سافٹ ویئر انڈسٹری. سو اگین, اسٹے بلیسڈ, اسٹے ہوم, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.